हाय व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं रोहन सराफ R7 रियल्टर्स से स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने के लिए आए हैं बाउदान में। प्रोजेक्ट जो है ब्रह्मा क्रॉप का प्रोजेक्ट है, जो कि 11 एकड़ में है, नियर टू चांदनी चौक। काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, हाई राइज टावर्स विद ऑल लग्जरी एमिनिटीज। प्रोजेक्ट की यूएसपी रहेगी, प्रोजेक्ट में आपको मिलता है हर एक यूनिट के साथ प्लंज पूल। ये किस यूनिट्स में मिलता है ये हम जरूर देखेंगे। अब कवर करेंगे लैंड पार्सल, जो कि यहाँ पे एक्सकवेशन का ऑलरेडी वर्क शुरू हो चुका है। दो बिल्डिंग्स की यहाँ पे पाइलिंग वर्क भी हो चुका है और प्लिंथ भी आ चुकी है। आप देख रहे हो सामने जो कमर्शियल है, दैट इज योर ओरेकल एम्ब्रोसिया रिसोर्ट। सो आपकी लोकेलिटी काफ़ी प्रीमियम है। आइए प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या इन्वेंट्री मिलती है और इसका पोजीशन कब है और इसमें आपको क्या एमिनिटीज मिलती है। आप ये जो लैंड पार्सल देख रहे हो मेरे पीछे, ये 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। वन ऑफ द लास्ट प्लॉट्स इन बाउदान रेसिडेंशियल जोन में आप अगर बात करते हो, क्योंकि इसके आगे एनडीए का लैंड पार्सल है, जो कि आप हिल देख रहे हो। यहाँ पे काफी सारा ग्रीन रहेगा, क्लोज टू नेचर रहेगा, विद गुड एंड यूनिक क्लाइमेट। और यहाँ पे देखिए काम फुल स्विंग में जो चल रहा है। वहाँ पे दो बिल्डिंग्स की आपकी प्लिंथ भी आ चुकी है, दैट इज द ओरेकल कंपनी एंड देयर इज एम्ब्रोसिया रिसोर्ट, और ये आपका पूरा रेसिडेंशियल हब है। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। जस्ट 1 मिनट ड्राइव फ्रॉम चांदनी चौक आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि हाई राइज है विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, और प्लस इसमें प्लंज पूल रहने वाला है, वो भी हम कवर करेंगे। और यहाँ पे चल रहा है आपके सैंपल फ्लैट का काम, जो आपको नेक्स्ट मंथ में ये देखने मिलेगा। आफ्टर पोस्ट दिवाली ये रेडी हो जाएगा। सो नाउ वी आर हियर एट द सेल्स ऑफिस आफ्टर सीइंग द लैंड पार्सल। हम आ चुके हैं सेल्स ऑफिस में। सेल्स ऑफिस में मैं आपको मिलाऊंगा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हेड करती है मैम, दैट इज प्राजक्ता मैम। इनसे 1 to 1 क्वेश्चन करेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में डीप जानकारी लेते हैं, विद योर लोकेशन, कनेक्टिविटी, क्या यूनिट आपको ऑफर हो रहे, क्या आपकी प्राइसिंग आती है, सारी चीज़ें जानेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज रहेंगे, आप मुझे डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर सकते हो। सो ऐसा वीडियो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि दिस इज द अल्ट्रा लग्जरी location also and the developer also of Pune with something different. You are getting a plunge pool in your each unit. ये कौन से फ्लोर पे आता है या फिर ये कौन से टावर्स में अभी अवेलेबल है, वो भी हम जानेंगे। सो कनेक्टिविटी काफ़ी रोबस्ट रहने वाली है, और पूरा वीडियो देखिए एंड तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो नाउ हम आ चुके हैं सेल्स ऑफिस में, जैसे मैंने आपको बताया। सो मेरे साथ है प्राजक्ता मैम, शी हेड्स द एंटायर प्रोजेक्ट, और इनसे हम जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। सो ये सन वैली है एट बाउदान, दिस इज बाय ब्रह्मा क्रॉप। सो काफ़ी रिनाउंड प्रोजेक्ट है मैम आपका। कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लैंड पार्सल हमने देखा, काफ़ी प्यारा है, नेचर के पास है। देर आर लैंडमार्क्स लाइक ओरेकल, एम्ब्रोसिया। कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। सो हमने सुना यहाँ पे प्लंज पूल भी अवेलेबल है क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज वी डू हैव क्लाइंट्स फ्रॉम मुंबई, एनआरआई एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो हम जानना चाहेंगे कनेक्टिविटी और डेवलपर के बारे में और आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैम। Yes. So, sir, first of all, Brahma Corps has been in this industry for 43 years now, 43 touching 44 now. So, we are into 4 segments, just not the real estate, but हमारा leisure भी है, education is also there, reality is also there, hospitality is also there. So, if you see hospitality wise, so we are into Sheraton Grand, it is ours. Then we have Lee Meridian, then we have Residency Club, that was the first Residency Club of Pune. Right. So, we have a vast, huge pool of, segments that we are offering in Pune. Mostly our projects are into east area. So if you can see Kalyani Nagar and everything, so it's a very good area again. If you can see right now in this education segment, if you see, we have taken over the Priyadarshini Wala school. So we are now introducing that Brahma Priya. So we are also giving this school in our vicinity here at Brahma Corp. Acha, itself in the project. Correct, in Sun Valley also. So right now what I have given in this segment is ki, right, like I said, I have a pool of clients in here. So they have like different requirements. So we have segregated it like segment wise. So I have if you have a pool segment wala concept, so I have 4.5, 3.5, 2.5 BHKs of bigger carpets, like yes, 2000 plus carpet, then 1700 carpet is there for 3.5, 2.5. Then I have a standard 3 BHK and 2 BHKs as well. So I'm providing everything for everybody. Likewise, it depends on what requirement you're looking at. And again, it's a 11 acres huge land parcel. So if you can see, the USP of this whole project is it's a single owner Brahma. And second thing is ki, if you see the boundary wall that we are sharing, that is with the biodiversity park. So there is nothing coming in
in future as per construction wise. So it will Okay. be an open view for the NDA hills and everything. अच्छा, So so yeah, I see the land parcel where the work is going on, excavation भी correct. देखा, plinth level भी है, Mhm. तो जो area आपका surrounded है, so that will be green completely. Correct, So correct. our clients will get that entire fresh air. Yes, we are providing you with the essence of Pune, that is the climate that Climate, okay. people were Bowdhan is looking. known for that. Correct, correct. So Achha. people are coming here for that only. So this will be for lifetime again. Okay. So the people who are mostly inclined towards the hilly side or nature-wise side, who wants peace when they come home from work. So we are providing them with that. With By that. default, we have a good forest here. Okay. So Yes. just wanted to understand quickly, आपकी connectivity location तो काफी अच्छा है, चांदनी Yes. चौक से हमको बस 2 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए. correct. So एक बार what is the nearest metro station here you So have? the nearest metro junction I can say Okay. that is coming in Chandni Chowk right now. So Okay. 1.5 kilometers the pinpoint distance from our project to Chandni Chowk, but it takes hardly like 3 minutes of travel. Distance. Yeah, Right, right. yeah, because of there is no congestion if you see this side of the Bowdan. So that is why bigger builders are coming here. If you enter this area, you will see a lot of builders that are purchasing lands because it's a developing area right now. Right, right. So appreciation wise, if you see land appreciation and property appreciation has a very good scope here. Right now, because आपके यहाँ पे city भी close by, कोथरूड hardly go by again 3 to 4 minutes. Yes. अगर मेरे clients मुंबई से आ रहे हैं तो उनके लिए NH48 that Correct, मुंबई बैंगलोर correct. highway. So you have the biggest highway that is going from here. So you have the connectivity from Ambrosia side as well. So if a person is coming from Bugao side as well, you have the direct connectivity. Then if you are coming from Chandni Chowk will be the main junction for Someone is coming from like Varje, Kothrood, so directly they have to come to you have Chandni to come Chowk. to Chandni Chowk. You have the underpass of Murshi to just pass by. You have just 1 minute of 1 distance from minute. there. And Yes. we are on the national highway again 753, Correct, which correct. connects to your Raigad, Mahad and all. Correct, correct. So it's, Destinations. you can say it's a hub of proper location wise. If you can see a builder, what can he provide in terms of location? That is connectivity. So yes, we have like 3-4 connectivities for our project to come from. Come from. Okay. Yes. And which is the nearest hospital like in? You can see the Chelaram Hospital is there. That is the biggest hospital that is here. Till 3 minutes ka distance hai just. So you can just pass by there. Yeah, and I can see Ryan School. Ryan International School is there. Then we have International Model School just opposite here. So that is also on walking distance. In my vicinity, I am giving you Brahma Priyaka High School already. First to 10th standard IGBC board. So that will be very relievable for the clients that are purchasing here. That will be of the same builder. The school is also of the same builder. So yes, Yeah. the trust will build like that. only, Like that. Yeah. So you have colleges like I can see PVIT also, Surya Datta. That close is by. very nearby. You can just walk to that. So PVPIT is a very famous college, you can say, Right. and that is why the public transport is very good here. So you don't need a connectivity वाला problem in here कि अरे कुछ cab वर्क का कुछ problem है. हाँ, because आप सेंटर में आते हो लोकेशन के. Correct, correct. और प्रोजेक्ट में अभी अपने कितने टावर लॉन्च किए हैं? Yes, so we have divided this whole 11 acre into 3 phases. Okay. So we have launched our first premium towers. So that is the premium segment is phase 1. So because the area that is in front of that is the largest one. So you have the biggest amenities in front of phase 1 right now. So we have opened 4 towers, tower 1 to 4. 4. So we have amenities plus we have given the segments of 3.5, 4.5, likewise I said plunge pool. And the people who are looking for the standard 3 BHK and 2 BHK, we have given that as well. That as well. Yes. And what land parcel is open in your project? Just 11 acre में कितना आपने open छोड़ा है? We have just 40% of construction, 60% we have given the Open open land land. parcel. Yes, yes, yes. So again, that is again the USP. Yes, correct, So correct. this will be the high-rise towers. Yes, these will be high-rise towers. So we have 5 floors parking and then 26 floors above that. So even if you go for city side view or hillside view, like I said, biodiversity park, you have open view for both sides. You don't have any interruption in future as well. Right. That So will be I guess 2 bedroom starts from 1.10 Yes, we start from 1.10. That is all inclusive package. package. Yes, and we have some goodies with that as well. Okay, you Yes, have yes. offers discount. Correct, So correct, definitely हमारे client के लिए कुछ अच्छे discounts offer रहेंगे. Obviously, they can visit our site for that. Okay, definitely they will visit. So आपके अगर 11th hour VCs हो, so the team is ready. Ma'am is also ready for that. And आपको कुछ भी services चाहिए या कुछ भी questions हो, directly आप मुझे comment section में pin कर सकते हो या नीचे दिए गए numbers पे call कर सकते हो. Yes, so this was the information. There was Prajakta ma'am with us. So she has explained the entire project. So thank you ma'am for being with us and accompanying us and explaining us this beautiful project. So अगर आपकी कोई भी inquiries, questions होते हैं तो आप मुझे comment section में पिन कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल कीजिए. आपकी VCs हो, साइड विजिट हो, so the entire team will support you and we are also there. So thank you so much for watching.